Bonjour, salut à tous, ça va? Okay, so today we are going to learn some phrases which are very effective for the spoken French, and I would suggest that just make the notes, write them, understand the context, and use them. It hardly matters you know French or you don't know. It is especially for the students who are the beginners or the students who are taking the classes but unable to speak. So we have the queries. Even we have some students who have learned French for 6 to 7 months from other institute and come to me that ma'am I can't speak though sentences or it is very difficult to speak, but other listening, reading and writing are okay. The reason is when you are doing speaking, do not think so much. Okay, mug up the sentences, use them in the context and all. Another thing is do not translate in your mother tongue or anything. Just use the French phrases as an original and use them in the different situations. Today we are going to learn this technique. Okay, allez-y. Maintenant ou plus tard. Ok? Plus tard, on va utiliser comme. For example, you want to say tu manges maintenant. Okay? So, those who are already learning French, उनको ये sentence समझ आएगा. For the beginners, I would just tell you what is manger. Mange, right? Mange होता है anything like pizza, mange. That is the verb. जैसे कि in the morning, chapati, mange. Now, I am not giving you the translation in other language because I want you to make it understand mange is only in French. Just learn it by the actions. Okay? There are few things which we will learn in other way, but जहाँ पे आप avoid कर सकते हो translation, it is very like it is good. Okay? So कोई भी चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बोला पिज़्ज़ा, burger like burger, McD, KFC, Monch. Okay? Now, tu is for the person tu. Okay? Second person. Like, मैं अपने लिए बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? Je, tu. Okay? ये second person. Tu. अब sentence देखो क्या है? Tu manges maintenant. Maintenant is the position, like situation abhi. So, tu manges maintenant. Okay? Now, the response. This is, suppose this is Riya and this is Rashmi. Okay? Now, Riya is saying, Riya di. क्या बोल रही है Riya? Tu manges maintenant? And what Rashmi is saying? No. Je vais. Je vais manger. This is your tense for the future. ठीक है, ये अभी के लिए प्रेजेंट टेंस. Je vais manger dans 2 heures. ओके, je vais manger dans 2 heures. राइट, कि मतलब dans 2 heures मतलब 2 घंटे के बाद या विद इन 2 hours, मतलब 2 घंटे में मैं खाऊंगी या बाद में खाऊंगी dans 2 heures. तो je vais manger dans 2 heures. ओके, सपोज आप बिगनर हो या आप ले रहे हो फ्रेंच क्लासेस बट आपको ये सेंटेंस समझ आ गया, राइट? क्या बोला मैंने? Tu manges maintenant? Non. Je vais manger dans 2 heures. भी अभी नहीं, je vais manger dans 2 heures. Okay? Now what you will write, we can change it. For example, I want to change this verb. Okay, with the context, we will say that instead of using manger, context change करते हैं. Let's see telephone. Okay, téléphoner. Now, téléphoner, on va utiliser tu téléphone, right? We will use tu téléphone. Tu téléphone maintenant. Tu téléphone maintenant. Okay? Now, what my response? No. Je vais téléphoner dans 2 heures. Okay, now I will replace this as well. Dans 2 heures किसमें हम replace कर सकते हैं? Bientôt. Bientôt.
ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेजिंग देखते हैं ये वाली कैसी है. ट्यू टेलीफोने. नाउ टेलीफोने मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट करूंगी प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ट्यू टेलीफोन. ट्यू ट्यू टेलीफोन maintenant. Okay, what I did, first of all, I have learned this कि tu manges maintenant. No, je vais manger. कि अभी के लिए मुझे ये फ्रेज बोलना है और ये. Then I will just change my word. Okay, देखो कैसे. अब मैंने बोलना है tu téléphone maintenant. मुझे अभी फोन करेगा. Tu téléphone maintenant. मैं क्या कहूँगी? No. No, je vais téléphoner dans 2 heures. ठीक है, 2 घंटे में करूंगी. So je vais téléphoner dans 2 heures. लेकिन आई कैन यूज दिस फ्रीक्वेंसी एज वेल. किसके साथ? बियांतो. जल्दी ही तुम्हें फोन करती. बियांतो इज जल्दी ही करूंगी फोन. नो, je vais téléphoner bientôt. Je vais téléphoner bientôt. One more example we can see in this. Par exemple, je vais dire tu. कोई और वर्ब लेना है, जैसे कि मैं बोलूं tu pars. Tu pars aux vacances maintenant. Tu pars aux vacances maintenant. ठीक है, मान लो ये रिया ने बोला, तो रश्मि क्या बोल रही है उसको रिस्पॉन्स में? नो. नो, je नो je vais partir. Je vais partir en vacances dans 2 heures. 2 घंटे में निकलने वाली हूँ. बियांतो. और आई कैन से प्लीज था. Got it? Right? So you can make number of sentences, situations, whatever comes to your mind with like this. Okay? So pars aux vacances होते हैं छुट्टियों पे जाना. So tu pars aux vacances maintenant? No. Je vais partir aux vacances plus tard. Okay? तो ऐसे ही you can use lot of things. जैसे मैं कहूँ त्रिवाई लगा सकते हो आप इसकी जगह पे. The verb त्रिवाई. तो मैंने क्या बोला? Tu travailles maintenant. तुम काम कर रहे हो अभी. त्रिवाई होते काम करना. Tu travailles maintenant? Non, je vais travailler. Put this frequency. Je vais travailler dans 2 heures. 2 घंटे में करूंगा. Je vais travailler. Je vais travailler bientôt. Right? Or I can say je vais travailler après. Okay, you can see use this frequency as well. Après le déjeuner. Je vais travailler après le déjeuner. D'accord? I hope you understand this. Kindly make the phrases in the comment box, whatever comes to your mind, and make the phrases. I would love to check it and correct it. And I would appreciate as well if you understood it well. Okay? So, till then, au revoir, bisous, à bientôt.